Hello everyone. Today we'll do practice of limit. So I want to say welcome to my channel and I am super excited to be live with you today. If you are joining me for the first time, please don't forget to subscribe and click the bell icon. This channel is all about helping you succeed in your maths exam. The today live session is going to really helpful. So stay tuned. I will take your question at the end. So that feel free to drop them in the chat anytime. Before we dive in, let me know in the chat where you are watching from and which exam you are preparing for. Let's get to know each other by this question. Can you solve? If you can solve, just write to me in the comment. First question is 2 cosec square x 2 to the power cosec square x plus 2 to the power cosec square x plus dot plus n power cosec square x and then power sine square x. This x limit is x tends to 0. Limit is x tends to 0 and this is our problem. ये मेरा प्रॉब्लम है. ओके इसको आज हम लोग को सॉल्व करना है. तो 2 to the power cos square x plus 2 to the power cosec square x plus dot n cosec square x then power sine square x. How can we solve this problem? So here these powers are similar everywhere. Okay, so what we can do, which is 1 to the power this 2 and then so on. So first consider y equal to cosec square x. I'm going to consider y equal to cosec square x. Now so this will be reduced to this form, that is 1 to the power y plus 2 to the power y plus so and so and n to the power y, and just reciprocal of it is sine square, so 1 by y. 1 by y is here, and then okay, if x tends to 0 it will be 0, means what, y tends to be infinity, so limit y tends to be infinity. Why? Because we know that cosec x equal to 1 by sine x, so x tends to infinity. This shows that this term, that is y, so this term is going to be infinity. If x जो है 0 जाएगा, x अगर 0 जाएगा तो y इन्फिनिटी हो जाएगा, तो y हमारा इन्फिनिटी हो गया इस केस में. अब ये पैटर्न इस तरह से होगा. अब यहाँ जो है ये किस फॉर्मेट में आ चुका है, तो y टेंस टू इन्फिनिटी और ये 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो ये सपोज इन्फिनिटी और ये 0, इस फॉर्मेट में ये आ चुका है. ओके, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आगे.
तो इस फॉर्मेट को हम लोग को है ना इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर y कॉमन and power 1 upon y, power 1 upon y, then 1 by n, maximum power I took common, 1 by n power y, then 2 by n power y plus plus dot dot and लास्ट में 1, इसके ऊपर पावर 1 upon y. ओके, मैक्सिमम पावर आई टू कॉमन हो गया, तो ये हमारा आया. अब यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी, y टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 by infinity 0, right? This term leads to n into 1 to the power 0, that is n into 1, and it is equal to n. Why this will cancel, so we have only n, and 1 by n power y plus 2 by n power y up to n. So this value is what? 1 by n to the power n is a constant number, n to the power y, so 1 by infinity it is 0, so 0 plus 0 0 plus 0 लास्ट में 1 है, तो 1 और 1 by y है, y infinity 1 by 0, 1 to the power 0 means what? 1, so it is n. ये इसका सॉल्यूशन हो गया n. क्योंकि अगर ये जो टर्म है इसको अगर एक्सप्लेन करें, 1 by n power y, this shows that 1 n to the power y. So if n is going to be infinity, y is going to be infinity, this shows that n to the power infinity, this is 1 by infinity, and that leads 0. That's why this is what? 0, this one is 0 0 0, so sum of all 0 is 0 plus 1, that is 1 here. N into 1, and then this one is what? 1 by infinity 0, so 0, 1 to the power 0 1, so ये 1 है. This is 1. We have another question, that is limit n tends to infinity and cx combination m by n power x 1 minus m by n power n minus x power n minus x. So this problem is very good, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है. अब यहाँ पे n सी एक्स m by n 1 minus m by n पावर n minus x, इसको तो हम लोग फॉर्मूला पे ब्रेक कर लेंगे, ये हमारा है, और इसको हम लोग n by x को जो है वो करते हैं. इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n by factorial x by n minus x factorial n minus x, I can write, ऐसे लिख सकते हैं. then m by n पावर x, और इसको लिख सकते हैं 1 minus m by n
right? Power n divided by 1 minus m by n पावर x, ऐसा लिख सकते हैं. Clear? Okay. Now we can have this one, because limit n tends to infinity, m by n power x, 1 minus m by n, 1 minus m by n power x. So here we have m to the power x and factorial x. You can write together, and then 1 minus m by n power n, 1 by n, this will be together. I'm just going to resolve this one, right? Let's do it here. This is m to the power x by factorial x. Okay, then 1 minus m by n power n divided by 1 minus m by n power x. This factorial n can be written as n into n minus 1, okay, n minus 2 dot dot n minus x minus 1, and then n to the power x, n to the power x. Clear? Now अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि m पे पावर x डिवाइड बाई फैक्टोरियल x इंटू 1 माइनस m बाई n पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस m बाई n पावर x, इस फैक्टोरियल को यहाँ पर इसको रिजोल्व कर दिए. फैक्टोरियल रिजोल्व करने के बाद ये जो टर्म है एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ये भी बाहर आ जाएगा. और एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये जो टर्म है ये क्या दे रहा है आपको, 1 माइनस एम बाई एन पावर इन्फिनिटी, एम पे इन्फिनिटी है, ओके, 1 माइनस एम बाई एन पावर एक्स. ये तो इसमें तो एन जो है इन्फिनिटी जब जाएगा तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 पे पावर एक्स दिए तो 1 हो गया, ये टर्म तो 1 हो गया, राइट. और ये बचा टर्म एम टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये 1 पावर इन्फिनिटी, ये 1 पे पावर इन्फिनिटी आ रहा. बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो पावर तो ये इधर आएगा, अंदर आ जाएगा, तो एम, ओके, बाई एन इंटू एन कैंसिल हो जाएगा, तो एम बचा, एम बचा. और इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसके ऊपर पावर ये जो है 1 बाई एन है, राइट. तो इसको हम लोग ई टू द पावर माइनस एम कर सकते हैं, राइट, हो सकता है. लेट्स डू इट. m to the power x divided by factorial x, then e to the power minus m, then limit n tends to infinity. अब यहाँ से n को कॉमन करेंगे, n आई एम टेकिंग कॉमन, n, ओके, तो ये हो जाएगा, that is 1 into 1 minus n, okay, 1 minus 2 by n dot 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 1 minus x minus 1 by n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. तो ये तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया, ये सब टर्म 1 आ गया. तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो होता है e टू द पावर माइनस m टू द पावर x डिवाइड बाई फैक्टोरियल x.
फैक्टोरियल एक्स, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। फिर ये वाला टर्म जो है टेंस टू इन्फिनिटी दिए तो जीरो हो गया। 1 माइनस एम बाई इन्फिनिटी जीरो, 1 टू द पावर एक्स दैट इज कांस्टेंट नंबर 1, 1 माइनस एम बाई एन, और यहाँ एम है तो ई टू द पावर ये माइनस एम हो गया, फॉर्मूला है ई टू द पावर माइनस एम हो गया। ओके, so this problem is solved in this way। ओके, इसके लिए एक और जो कॉन्सेप्ट है, 1 प्लस माइनस यू नो 1 प्लस 1 by fx, 1 plus 1 by fx is equal to here fx, that is e, that is e, ये होता है। सपोज कि वन, एक और इस पे क्वेश्चन जो था उसको देखेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर इसका कॉन्सेप्ट को समझ लें कि लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो जो है 1 प्लस 1 बाई एफ ऑफ एक्स होता है, और दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो इसका जो होता है डायरेक्ट ई हम लोग कर सकते हैं, जो यहाँ पर होगा वही पावर यहाँ रहेगा, वही पावर वहाँ रहेगा। तो उस केस में हमारा वो प्रॉब्लम होता है। जैसे एक प्रॉब्लम है इसी पे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पावर एक्स। इसको कैसे करेंगे, तो ये जैसे है मैंने कि 1 प्लस ये टर्म यहाँ होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अभी लेकिन एक्स आना है तो इसके ऊपर जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई एक्स, तो ये आपका 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर पावर 1 बाई एक्स। तो ये तो आपको लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये तो आपको ई दे देगा, और ये 1 बाई इन्फिनिटी ये जीरो, तो ई टू द पावर जीरो 1। तो इसी तरीके का आपको वहाँ भी हो जाता है कि अगर ये दिया हुआ है 1 माइनस एम बाई एन पावर 1 माइनस एम बाई एन पावर एन, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसमें क्या हो गया, इस जैसा है एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, माइनस एम यहाँ पर है। इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एम बाई, ओके 1 प्लस ये माइनस एम है, माइनस एम बाई एन पावर एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स था, तो ई यहाँ पे क्या है, माइनस एम है, ये एन है, जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स यहाँ है। तो ई टू द पावर ये हमारा इसका ई हो गया, और ई टू द पावर माइनस एम हो गया, क्योंकि इस टर्म में माइनस 1 है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया ई टू द पावर माइनस एम, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है ई टू द पावर माइनस एम। ठीक है, इसी बेस पे हम लोग को आगे लेके चलना है प्रॉब्लम को। कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे हम लोग। वर्कआउट होना चाहिए। लेट्स हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाउ। अब जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यस, if you are watching my videos, please write in the comment where you are watching from and which exam you are preparing for।
Can you solve this problem? If I'm giving this one, okay, this problem is based on your inverse trigonometry, tan inverse x, then x by root under 1 minus x square divided by x, and limit x tends to 0. This problem, tan inverse x by root under 1 minus x square by x, इसको सॉल्व करना है हमको. Can you tell me the answer in the comment box if you know? This tan inverse x by root under 1 minus x square is there. So it is like, tan x by x. वैसा हम इसको कर सकते हैं. Okay, let's do it. This problem can be write as tan inverse x by root under 1 minus x square, and then I can write x by root under 1 minus x square. This is what I have divided by this term, so I need to multiply here. यहाँ multiply करेंगे, so 1 minus x square, and we had here x, so that is 1 by x. So you can cancel this x, limit x tends to infinity, so you can cancel this one, इसको cancel कर देंगे. ओके, तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स 0 by 0 1, दिस इज 1, ये 1 आ जाएगा, राइट, एंड ये 1 माइनस ये 0, तो ये 1. तो इसका रिजल्ट ये तो हो गया 1 इंटू 0, ये 1. 1 इसका सोल्यूशन है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. In the same way, we have one question. Okay, based on sine theta. Okay, so let's do it. This question. We have this one, sine x minus pi by 6 divided by root under 3 by 2 minus cos x, limit x tends to pi by 6 plus h. This is the question. So we can write here that x is equal to, pi by x tends to pi by 6. So x tends to pi by 6 plus h. Then we can have x is equal to x tends to, suppose, pi by 6. This leads to x tends to 0. So here I'm just going to replace pi by 6 plus h. So we have sine, okay, pi by 6 x tends to pi by 6 plus h minus pi by 6, and then root 3 by 2 minus cos x is going to be pi by 6 plus h.
and here limit h tends to 0. This one will be cancelled, so we have limit h tends to 0 sin h by root 3 by 2. Okay, and this term is going to be breakdown. इसको ब्रेक डाउन करेंगे कैसे, तो साइन एच बाई रूट 3 बाई 2 माइनस, ये कॉस ए प्लस बी जैसा है, कॉस ए प्लस बी जैसा है, या इसको कॉस पाई बाई, ये क्या है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस पाई बाई 6 इसको लिख सकते हैं। तो ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस पाई बाई 6 प्लस एच क्या आया, साइन एच बाई कॉस पाई बाई 6, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस पाई बाई 6 प्लस एच, पाई बाई 6 प्लस एच है। ओके, अब ये जो है आपको क्या दे रहा है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। लेट्स डू इट। लिमिट सब में है h टेंस टू 0, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई, ये टर्म जो है आपको इसको ब्रेक डाउन किया जाए, कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 6 इंटू cos a plus b, cos a into cos b. Okay, here we have plus, so we are going to write here minus, then sin a into sin b. This minus minus plus, we have here cos h, or we can do one thing. We have this formula sin a minus b, cos a minus cos b. So this is what 2 sin, okay, 2 sin a plus b, 2 sin a plus b divided by 2 into sin a minus b, okay, a minus b, c minus b, उस फॉर्मेट में कर देंगे। ओके, सो लीव दिस टर्म, ये वाला टर्म आई एम जस्ट लिविंग, h tends to 0 sin h by, this will be, you know, 2 sin, okay, a minus c minus d, 2 sin pi by 6 plus h minus pi by 6, okay, divided by 2 into sin pi by 6 plus pi by 6 plus h by 2. I can write this one cancel, so it will be h by 2, and this is what, pi by 6, pi by 6, so pi by 3, pi by 3 plus h by 2, so here pi by 6 it will be, limit h tends to 0 sin h by, so this term is what, 2 sin h by 2 into sin, this will be cancelled, so we have pi by, this one will be pi by 3 plus h, that is divided by 2, so here pi by 6 हो जाएगा,
sine h 2 sine h by 2, ये 2 sin h by 2 इंटू cos h by 2 जैसा आएगा, कैंसिल होगा बाद में, sin पाई बाई सिक्स प्लस h by 2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग और आगे ले जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको फिर हम लोग sin h by 2 जैसा भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। h टेंस टू 0 है तो ये टर्म 0, लिमिट h टेंस टू 0, तब ये प्रॉब्लम कैसे लीड होगा, वी कैन राइट sin h as 2 sin h by 2 into cos h by 2 divided by 2 sin h by 2 into sin pi by 6 plus h by 2, limit h tends to 0, 2 cancel, h by 2 cancel, we have cos h by 2 divided by sin pi by 6 plus h by 2, लिमिट h टेंस टू 0, ये जब 0 होगा cos 0 1, ये 0, sin pi by 6 sin 30 degree 1 by 2, so ये 1 by 2, this 2 will go up, so we have 2, and this is the solution. We came to this conclusion, this is the solution. Okay, so we are done the great question today. Okay, tomorrow we'll come with some few important question. So up to now being with me, thank you so much. Okay, tomorrow morning I will be there, and Vishwas Mewada, thank you, welcome Vishwas. Can you tell me where you are from? Vishwas, can you tell me where you are from and which exam you are preparing for? Is there anything I can help you? Hi Vishwas. Vishwas, hello. If you are watching me, just tell me you are from, कहाँ से हो आप विश्वास? लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग होते हैं, और हर बार ये हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं. Okay, in the next time we will meet with more question. For that we will prepare, and we have some exciting problem, so I can come with. Okay, you can take this one, okay, as a notes, you can just replay, so it is there on the live, you can go and you can check it out. Okay, and you can solve it by yourself. Okay, if you are not able to solve, you can just check it out my steps, and you can go through that. If you have another alternative method, you can write to me in the comment.
that will be appreciable. Your effort will be a kind of appreciation. So thank you. Bye bye. Be happy. Stay safe. See you in the next video.